संसद के बजट अधिवेशन के शुभारंभ के अवसर पर मैं प्रभात डबराल अपनी सहयोगी कमेंटेटर चंद्रलेखा के साथ संसद भवन में आपका स्वागत करता हूं। अब से कुछ ही देर बाद भव्य केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। The historic Central Hall of Parliament, awaiting the President to listen to his joint address. The Central Hall initially was a library at the time before the Constituent Assembly assembled here to adopt the Indian Constitution. महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियां उनके अभिभाषण के समाप्त होने के थोड़ी देर बाद संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी। The President addresses the first session of the Parliament, a joint session, at the beginning of every year. And of course this happens to be the budget session each year. The budget session is always a very heavy one, and this time too it's no exception. The members of Parliament are awaiting the President's arrival. महामहिम राष्ट्रपति की सवारी केंद्रीय कक्ष के इस गेट पर से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव उनकी अगवानी करेंगे। The presidential procession is entering one of the three courtyards leading to the Central Hall. Heading the procession are the President's personal military staff. Also in the procession are the Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao, the Minister for Parliamentary Affairs. Bringing up the rear of the procession are the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha, followed by the Secretaries General of the two houses. अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति की ये परंपरागत सवारी केंद्रीय हॉल में पहुंचेगी, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस समारोह की शुरुआत होगी। The fanfare plays as soon as the President enters the Central Hall. और जैसा कि हमने पहले बताया, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियां अब से थोड़ी ही देर बाद संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी। माननीय सभासदों, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी,
माननीय सदस्यगण, संसद के इस अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। नए वर्ष में आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि आज देश का परिप्रेक्ष्य विगत वर्ष की तुलना में बदला हुआ है। वर्ष 1993 के शुरू में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन जैसे जैसे ये वर्ष बीतता गया, हमारे नागरिकों ने अत्यधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया अपनाई और 1993 का वर्ष समाप्त होते होते निश्चित ही आशा की किरण सामने दिखाई देने लगी। सभी मोर्चों पर निरंतर प्रगति हुई, जिसका आभास कानून तथा व्यवस्था की सुधरती हुई स्थिति, खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन, खरीद के अभूतपूर्व स्तर, खाद्यान्नों के बहुत बड़े भंडार, मुद्रास्फीति को एकल अंकीय स्तर पर बनाए रखने, विदेशी मुद्रा के संतोषजनक भंडार, व्यापारिक घाटे में पर्याप्त कमी, निर्यात में वृद्धि, मूलभूत संरचना के कुछ आवश्यक क्षेत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार और प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो दोनों में अधिक विदेश पूंजी का निवेश से मिलता है। ये सभी हमारे उभरते हुए आशावाद के प्रतीक हैं और इसके औचित्य को सिद्ध करते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऊर्जा को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को फिर से प्राप्त कर लिया है। हमारे पास इस सर्वतोमुखी उपलब्धि पर संतुष्टि महसूस करने का कारण है और प्रमाण है। लेकिन हमने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है। इसी आशा के आधार पर सरकार 1994 में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति में नियंत्रण है। पिछले वर्ष पंजाब में जो सफलता प्राप्त हुई, उसे और सुदृढ़ किया गया है। देश के 5 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सरकार इस सुधार की उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प है और शेष महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रयासरत है। पिछले वर्ष लगभग इसी समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर अयोध्या मसले की छाया रही। विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के संभावित असर को लेकर लोगों में गहरी चिंता व्याप्त थी। देशवासियों में व्याप्त बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को भी यह श्रेय प्राप्त है कि तरह तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं, वे सब गलत साबित हुईं। वातावरण में पर्याप्त सुधार आया है और हम इस विवाद के स्थायी समाधान की आशा कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है और इस न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जा रही है। उच्चतम न्यायालय की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार समुचित उपाय करेगी। अयोध्या का मसला आज सांप्रदायिकता को राजनीति से जोड़ने में निहित खतरे का ज्वलंत उदाहरण है। इस विकार को दूर करना और धर्म तथा राजनीति दोनों को अपने अपने न्याय संगत क्षेत्रों में बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे धर्मनिरपेक्ष देश की आज यही मांग है। आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाए और इसके लिए कारगर उपाय किए जाएं। सरकार इस बारे में दिए गए सुझावों का स्वागत करेगी। जम्मू और कश्मीर में हम आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की नीति पर चल रहे हैं। इस वर्ष पुलिस तथा सुरक्षा सेनाओं को अपनी आतंक विरोधी कार्रवाइयों में पर्याप्त सफलता मिली है। उनकी कार्यदक्षता को और बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बल उपयोग करने में अधिक से अधिक संयम बरता जाए। हजरत बल दरगाह में जो भारी संकट उत्पन्न हो गया था, उसे स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा सेनाओं ने जनता के सहयोग से सराहनीय ढंग से हल किया। इस संकट के समाधान ने सरकार के संयम के दृष्टिकोण की क्षमता को प्रदर्शित किया है। जब भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें लगा हो कि बल का अधिक प्रयोग किया गया है, तो तुरंत जांच बैठाई गई है और इस पर कार्रवाई भी की गई है। कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए
आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। साथ ही प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया गया है और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। हम आम जनता की परेशानियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। हम जनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी प्रभावी भागीदारी का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और हम इसमें सीमा पार से यानी किसी और से अस्थिरता पैदा करने की किसी प्रयास को निष्फल कर देंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोडो समझौते के अनुरूप अंतरिम बोडोलैंड स्वायत्त परिषद की स्थापना जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। जब कोकराझार और बोंगाई गांव जिलों में गैर जनजातीय लोगों के खिलाफ हिंसा भड़की तो असम सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। नागा और कुकी लोगों के बीच हिंसा भड़कने और मणिपुर में कानून व्यवस्था की सामान्य स्थिति बिगड़ने पर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई की। इससे यह परिलक्षित होता है कि सरकार विघटनकारी तत्वों से सख्ती से निपटेगी। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग के सदस्यों में एक भूतपूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के और एक मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं। आयोग की स्थापना इस बात की द्योतक है कि हम मानवाधिकार के मसले पर शीघ्र और स्पष्ट कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। आयोग ने पूरे संकल्प से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 1993 में विभागों से संबद्ध संसद की 17 स्थायी समितियां गठित की गईं ताकि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों, अनुदान मांगों, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों और राष्ट्रीय बुनियादी दीर्घकालीन नीति प्रलेखों की विस्तृत जांच की जा सके। इससे संसद के कामकाज में भारी सुविधा होगी। देश को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में भूकंप से हुई अभूतपूर्व क्षति इनमें सबसे बड़ी है। इन सभी आपदाओं में सरकार ने सराहनीय सतर्कता का परिचय दिया है और तेजी से राहत प्रदान की है। कई अन्य देशों की सरकारों, विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने भी तत्परता से सहायता की है। हम उन सभी के आभारी हैं। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय का एक बृहद पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पुनर्निर्माण कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों को भी समुचित रूप से संबद्ध किया जा रहा है। 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने पिछले वर्ष गति पकड़ी और उन्हें निरंतर आगे बढ़ाया गया है। इसके बावजूद अभी और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार ये जानती है सुधार कभी भी पीछे न मुड़ने वाली और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रति देश की प्रतिक्रियाओं तथा परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखकर दृढ़ता और दूरदर्शिता से इसे लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कार्यान्वयन में निरंतर और ठोस प्रगति हुई है जो आम सहमति पर आधारित है। हम सावधानी से इस गति को और आगे बढ़ाएंगे। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के कार्य निष्पादन तथा उनकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कमी की गई है तथा कुछ और उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। 31 मार्च 1993 को घोषित नई आयात निर्यात नीति में कृषि सेवाओं के क्षेत्र जिनमें तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं, निर्यात की प्रक्रियाओं को कारगर और उदार बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1993-94 के बजट में अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों को सुविधा प्रदान की गई। सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों पर विशेष बल दिया गया है। वित्तीय संस्थाओं को अनिवार्यतः नया स्वरूप देना और उन्हें मजबूत बनाना होगा ताकि वे निजी क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण आए नए उत्तरदायित्वों का
निर्वाह कर सके। मार्च 1993 में एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन विनिमय दर का एकीकरण और रुपये को खुले बाजार में प्रवाह की छूट प्रदान करना था। यह तथ्य कि रुपये को खुले बाजार में लाने के बाद उसका मूल्य स्थिर रहा है, इस विषय में सरकार के उचित निर्णय का प्रमाण है। मूल आर्थिक सूचकों से यह पता चलता है कि हालांकि यह वर्ष कठिन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ था, किंतु वर्ष 93-94 के दौरान अर्थव्यवस्था का कार्य निष्पादन संतोषप्रद रहा है। 92-93 में सकल घरेलू उत्पादन में अनुमानतः 4% की वृद्धि हुई है। सरकार को यह आशा है कि 93-94 में भी विकास की दर लगभग इसी स्तर पर बनी रहेगी। इस वर्ष कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति की दर गिरकर 6% से भी कम हो गई थी, जबकि उसकी उच्चतम दर 8.4% रही। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भारतीय बाजार में विश्वास बढ़ा है। नए औद्योगिक नीति के प्रारंभ से 1993 के अंत तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश इक्विटी के रूप में अब लगभग 13,000 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश होने का अनुमान है। इस पूंजी निवेश की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अधिकांश भाग बिजली, तेल शोधन, खाद्य प्रसंस्करण, धातुकर्मी उद्योग, विद्युत उपस्कर, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित पूंजी निवेश का लगभग 7% ऐसे उत्पादों के लिए होगा जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। निवेश की इस राशि को 3-4 वर्ष की अवधि में खर्च किया जाएगा, जो कि बृहत परियोजनाओं के प्रारंभ होने से उत्पादन शुरू होने तक की अवधि है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने पर बराबर भारी जोर दे रही है। व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनों एवं विनिमय दर को मुक्त किए जाने तथा अर्थव्यवस्था का सामान्य उदारीकरण किए जाने के सुपरिणाम निकले हैं और निर्यात में खासी वृद्धि हुई है। अप्रैल-दिसंबर 1993 की अवधि में यह वृद्धि डॉलर के रूप में 20% के करीब थी, जबकि 92-93 की इसी अवधि में यह वृद्धि 3% से कुछ अधिक थी। सरकार कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पर्याप्त और तर्कसंगत मूल्य वाले निवेशों का समय पर प्रावधान करना तथा एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे समय पर मूल्य की घोषणा हो सके और जिससे अधिक उत्पादन हो तथा देश की घरेलू ज़रूरतों के साथ निर्यात की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, सरकार के प्रमुख उद्देश्य हैं। पूरी कार्यनीति के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए योजना में परिव्यय में 26.6% की वृद्धि की गई है। 1992-93 में जहाँ 1,050 करोड़ रुपये थे, वहाँ 93-94 में बढ़ाकर इसे 1,330 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 92-93 में खाद्यान्न का उत्पादन 18 करोड़ मीट्रिक टन रहा, जो 91-92 में हुए उत्पादन से 7.1% से भी अधिक था। 93-94 में खरीफ फसल में खाद्यान्न का उत्पादन 9 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी होने की संभावना है। सरकार उद्यान कृषि, जलजीव संवर्धन, तिलहनों, दालों तथा निर्यात की संभावनाओं वाली अन्य वस्तुओं को महत्व देकर कृषि क्षेत्र के विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है, किंतु ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हमारे अपने उपभोक्ताओं के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। ग्रामीण सहकारिता ऋण प्रणाली तथा विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों के लिए अनिवार्य विवरण, संसाधन या अन्य सेवाओं को पुनः सक्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र की नई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विस्तार सेवाओं को व्यापक आधार दिया गया और इसमें स्वैच्छिक संगठनों का भी और अधिक सहयोग लिया जाएगा। निर्धनता स्तर को घटाने के उपाय के रूप में हमारी कृषि नीति का लक्ष्य भू और जल संरक्षण की समन्वित नीति तथा कार्बनिक और जैव उर्वरकों को एवं उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कृषि निवेशों का प्रयोग बढ़ाकर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। 8वीं योजना में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए
पुनर्गठित राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूखी भूमि कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को अनाज, चारा, ईंधन और रेशे के साथ उत्पादन के लिए तैयार किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन प्रणाली में विविधता आएगी तथा अंततः जल विभाजक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय के स्तर और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस परियोजना से भूमिगत जल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे परियोजना क्षेत्र में सूखे से बचा जा सकेगा। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विकसित किए जाने के लिए 2500 छोटे जल विभाजक क्षेत्रों की पहचान की गई है और इन पर काम शुरू कर दिया गया। नाइट्रोजन उर्वरकों की विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ाया गया है और इससे भी अधिक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता सीमित है। अतः विदेशों में, विशेषकर खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भूपोषकों तथा का संतुलित प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी, जिससे उत्पादन का स्तर बनाए रखा जा सके। कृषि नीति के अंग के रूप में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे खाद्यान्नों को राज्यों में लाने ले जाने के संबंध में सभी प्रतिबंधों को हटा दें। उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने में सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही प्रबल रही है। गरीबों की खर्च सामर्थ्य को बढ़ाने की दृष्टि से नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों को सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों की तुलना में 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक कम रखा गया है। 92 में योजना के शुरू होने के समय वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्र के अंतर्गत 10,580 नई उचित दर की दुकानें खोली जाने की संभावित थी। इसमें इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य की सीमा को पार करते हुए 11,681 नई उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी। इस योजना के लागू होने के समय से 1,81,296 टन भंडारण क्षमता वाला स्थान उपलब्ध कराया गया या किराए पर लिया गया। नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ है कि योजना के लागू होने से पूर्व की तुलना में करीब 15 लाख मीट्रिक टन अधिक खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नया ग्रामीण आयाम जुड़ा है। खरीद प्रयासों में तेजी लाए जाने से 1 जनवरी 1994 को केंद्रीय पूल में स्टॉक 2 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्टॉक है। आवश्यक हुआ सरकार इन क्षेत्रों में और अधिक प्रोत्साहन आसानी से देने की स्थिति में है। सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वे महिलाओं हों या बच्चे, अल्पसंख्यक हों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग विकास की मुख्य धारा से अलग नहीं रहना चाहिए। 93-94 में गरीबों के विकास के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संसाधन जुटाए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए संशोधित परिव्यय 56% बढ़ गया, जबकि कल्याण मंत्रालय का योजना परिव्यय 880 करोड़ रुपये से बढ़कर 980 करोड़ रुपये कर दिया गया। सर्वाधिक पिछड़े 120 जिलों में जवाहर रोजगार योजना को सुदृढ़ बना दिया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी को प्रति परिवार के 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। 92-93 में शुरू किए गए ग्रामीण कारीगरों के लिए उत्पन्न औजार किट कार्यक्रम को 93-94 में 16 जिलों में शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार देश के कुल 162 जिलों में 2,30,000 ग्रामीण कारीगरों को लाभ पहुंचाया गया है। बुनकरों के कल्याण एवं विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाए गए। इसके अंतर्गत आवास, कार्यस्थल, हथकरघा विकास केंद्र, क्वालिटी ड्राइंग इकाई, दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशील पूंजी शामिल है। वर्ष के दौरान 1,372 करोड़ रुपये लगाए गए। हथकरघा विकास केंद्र एवं क्वालिटी ड्राइंग का इकाइयों के लिए 93 के अंत में कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि वर्तमान इकाइयों का विलय विस्तार करके नई इकाइयाँ स्थापित की जा सके। सन 93 के लिए 120 केंद्र तथा 20 इकाइयों के लक्ष्य स्थान पर 213 केंद्र एवं 94 इकाइयों को स्वीकृति दी गई। 25 केंद्र एवं 25 इकाइयों ने काम करना भी आरंभ कर दिया है। सरकार ने निर्धनों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी युवकों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 3 नई योजनाएं बनाई हैं। देश के 1752 सर्वाधिक पिछड़े एवं दूरवर्ती ब्लॉकों में, जहां देश के
17 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार आश्वासन योजना लागू की गई है ताकि उन्हें कृषि की खाली समय में 100 दिन के लिए सुनिश्चित मजदूरी रोजगार मुहैया कराया जा सके। इस प्रकार यह योजना और ऊंचे स्तर पर ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराती रहेगी। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं को अपनी कमाई और घरेलू संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा बरतने में समर्थ बनाएगी। 4 लाख से अधिक महिलाएं पहले से इस योजना के तहत ग्रामीण डाकघरों में अपने खाते खोल चुकी हैं। इस योजना और राष्ट्रीय महिला कोष से ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्योगों में सतत रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एक रोजगार योजना शुरू की गई है। अब तक विभिन्न राज्यों में युवाओं से लगभग 1,95,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 41,275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है, उन्हें सिफारिश करके बैंकों को भेज दिया गया है। उनमें से लगभग 2,000 आवेदन पत्र मंजूर भी कर लिए गए। चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम में 40,000 लाभभोगियों को शामिल किया जाएगा। 94-95 से प्रतिवर्ष 2,20,000 लाभभोगियों को इसमें शामिल करने का विचार है। इस प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कुल 7 लाख लाभभोगियों को इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने और इनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है। कमज़ोर वर्गों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखने और उनके संबंध में अपेक्षित निर्देश और बल देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। यह विशेष कक्ष कार्यान्वयन विभागों, क्षेत्रीय भ्रमण तथा स्वतंत्र मूल्यांकनों पर आधारित है। आधारित सूचना से फीडबैक प्राप्त करेगा ताकि कार्यक्रमों की सभी संभावित रुकावटों को दूर किया जा सके। संबंधित क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को समन्वित कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए सचिवों की एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है, जो इन तीनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। संचार सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में और विस्तार किया जाएगा। 93-94 में 46,800 पंचायतों को टेलीफोन से जोड़ा जाएगा। 94-95 में 72,000 गाँवों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं में विशेष घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत सन 93 में वृद्धि की गई और इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया ताकि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या इससे अधिक है, उन क्षेत्रों में आधारित संरचना के विकास की योजनाओं को इसमें शामिल किया जा सके। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम का पारित किया होना इसी वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सफाई कर्मचारियों की मुक्ति पुनर्वास के त्वरित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा रहा है। सरकार देश के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। कानून के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की रक्षा तथा उनके लिए बने सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। 92-93 के दौर में लगभग 21 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों, 8 लाख अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के ऊपर आने में सहायता दी गई। 93-94 के दौरान यह सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के इन परिवारों की संख्या बढ़कर क्रमशः 27 लाख और 9 लाख हो जाने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में जनजातीय महिला साक्षरता बहुत कम है, उनमें इस वर्ष शिक्षा परिसर बनाने की स्कीम शुरू की गई है। अब तक ऐसे 13 परिसरों को मंजूरी दी गई। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का कारोबार जो 91-92 में 22 करोड़ था, 92-93 में बढ़कर 86 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में इसके काफ़ी अधिक बढ़ जाने की संभावना है। राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त और विकास निगम ने चालू वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की। 93 के दौरान इसमें 80 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए और आगामी साल में इसका प्रस्ताव अपने काम को दुगना करने का है। भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का चिर परीक्षित आरक्षण 8 सितंबर 1993 को तब साकार हुआ जब वर्तमान सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के आदेश जारी किए। इसके साथ ही देश के अन्य पिछड़े वर्गों की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आकांक्षा पूरी हुई। बाबा साहब अम्बेडकर की रचनाओं के क्षेत्रीय भाषाओं के में प्रकाशन से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया गया और हिंदी,
तमिल, गुजराती प्रत्येक में 2-2 खंड प्रकाशित किए गए। अन्य भाषाओं में भी कार्य की बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। दादा साहब के दर्शन में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 8 पीठों की मंजूरी दी गई है। मौजूदा वक्फ अधिनियम 1954 और वक्फ संशोधन अधिनियम 1984 के स्थान पर अगस्त 1993 में संसद में एक नया वक्फ विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ वक्फ बोर्ड का और अधिक लोकतांत्रिक गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें वक्फ मामलों से संबंधित मसलों का निर्णय करने और वक्फ की संपत्ति की बेहतर रक्षा और प्रबंध के लिए वक्फ अधिकरण की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम इस वर्ष काम शुरू कर देगा, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी। इसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है। अपने पिछले अभिभाषण में मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की सन 1992 में की गई समीक्षा और उसमें किए गए संशोधनों का उल्लेख किया था। सरकार साक्षरता और पश्च साक्षरता अभियानों तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रति एक नए जिला विशेष और समुदाय अभिमुख दृष्टिकोण द्वारा समर्थित पूर्ण साक्षरता अभियानों की अभिनवकारी नीतियों पर आधारित प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। केरल और पांडिचेरी के सभी 18 जिलों ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। 32 जिलों में जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नव साक्षर लिखना पढ़ना फिर से न भूल जाएं, पश्च साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। इस समय 258 जिलों में 238 पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहे हैं। नए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में भागीदारी योजना एवं प्रबंध पर जोर दिया गया है और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर एवं विकेंद्रीकृत प्रबंध के माध्यम से स्कूलों की प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में भारत 9 विश्व के 9 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के सबके लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी और उसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस सदी के अंत तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6% तथा शिक्षा परिव्यय बढ़ाने की सरकार के निर्णय की घोषणा की। नई पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार पृथक पृथक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करके और विकेंद्रीकृत प्रबंध द्वारा सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर में कमी हो रही है। 81-91 के दशक में वार्षिक औसत चर संघात की वृद्धि दर 2.14% थी, जो 93 में घटकर 1.9% रह गई। अशोधित जन्म दर जो 51 से 61 में दशक में 41.7% थी, 92 में घटकर 29% रह गई। अशोधित मृत्यु दर जो 51-61 में 22.8 थी, वो 92 में घटकर 10 रह गई। कुल प्रजनन दर जो 61 में 5.97 थी, 91 में घटकर 3.6 रह गई। पूरे देश में शिशु मृत्यु दर 61 में 146 प्रति हजार जीवित शिशु थी, ये 92 में घटकर 79 रह गई। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, परंतु जनसंख्या में वृद्धि अभी भी विचलित करने वाली है। सरकार जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समूचा राष्ट्र एकमत है। इसके लिए राज्य सरकारों, अग्रणी नेताओं, गैर सरकारी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों की ओर से बहुआयामी एवं बहुक्षेत्रीय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में एकमत होकर लोगों को छोटे परिवार के मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए।
राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में गठित की गई जनसंख्या समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भावी कार्रवाई के बारे में मुख्यमंत्रियों और विचारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए। यह कार्य शीघ्र ही किया जाएगा। विकास प्रक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के परस्पर संबंध के प्रति हम पूरी तरह सजग हैं। हमारी वन और वन्य जीवन नीतियों के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग की आवश्यकता हमारी प्रमुख नदियों की सफाई और प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों में परिलक्षित होती है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए मरुस्थल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बहस में भाग लेते समय हमने 92 के रियो शिखर सम्मेलन में संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के संबंध में उठाए गए मूलभूत मसलों पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार विकास से संबंधित हमारे प्रयासों में हमारी पर्यावरण संबंधी चिंताओं का पूरा ध्यान देगी। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निरंतर प्रगति हुई है। यद्यपि हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की उड़ान में असफल रहे, परंतु इस अनुभव से काफ़ी लाभ मिला। संग्रह किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और इससे जटिल प्रणालियों को प्रभावशीलता सिद्ध हुई है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की अगली उड़ान अगस्त सितंबर 1994 में किए जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के विकास में भी प्रगति हुई है आज, जिससे कुछ वर्षों के बाद इनसेट श्रेणी के उपग्रह छोड़े जा सकेंगे। इनसेट 2A को चालू करने के 1 वर्ष के भीतर पिछले वर्ष हमने इनसेट 2B को सफलतापूर्वक छोड़कर और चालू कर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इनसेट 2B से दूरदर्शन को अपने 5 उपग्रह चैनल शुरू करके अपनी सेवाओं में वृद्धि करने में मदद मिली है। इससे दूरदर्शन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण सशक्त बना है। भारत की एक सशक्त और व्यापक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक आधार संरचना है। भारत ने विभिन्न उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस संदर्भ में मैं आश्वस्त हूँ कि पिछले शनिवार को अग्नि के प्रक्षेपण में जिस उच्च तकनीकी क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है, उसकी प्रशंसा करने में माननीय सदस्यगण मेरा साथ देंगे। आपने भी दिया ही है। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की गति पर्यावरण के अनुरूप प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता के कारण हमसे अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप हमें अपनी क्षमताओं पर और अधिक निर्भर रहना होगा। सरकार इसके लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा की महान क्षमताओं के उपयोग के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन देने हेतु दृढ़ संकल्प है। उभरते हुए आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अनुसंधान परिणामों से हमारे उद्योग लाभ उठा सकेंगे। उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा जैविक प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाएगा। सौर और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के लिए उन्नत सामग्री और साधनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सशस्त्र सेनाएं देश की भूभाग की अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर निरंतर चौकसी रखती हैं। राष्ट्र को इन सेनाओं पर तथा उन रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर गर्व है जिन्होंने हमारी रक्षा तैयारियों में सराहनीय योगदान दिया है। गोला बारूदों के स्वदेशी विकास और रक्षा उत्पादन यूनिटों के विविधीकरण पर तेजी से प्रगति हुई है। अपने सामान्य कर्तव्य के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाएं आवश्यकता पड़ने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा विद्रोही गतिविधियों से निपटने में सिविल प्राधिकारियों को सहयोग देती रही है। वे प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्यों में भी सहायता करती रही है। इन क्षेत्रों में उनका कार्य अनुकरणीय रहा है। सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कर्मियों को बेहतर सुविधाएं और स्थितियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। फील्ड एरिया में तैनात कार्मिकों को हाल ही में अपेक्षाकृत अधिक भत्ते प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन में एक बार वृद्धि स्कीम का लाभ
2 लाख अतिरिक्त पेंशनधारियों को भी दिया जाएगा। सतत अंतर्राष्ट्रीय विपणन के परिणाम स्वरूप सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वास उत्पन्न करने में सफल रही है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सुरक्षित पर्यटन स्थलों में से है। इसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 93 और जनवरी 94 के महीनों में पर्यटकों के आगमन में अब तक की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 92 और 93 की अवधि के आए पर्यटकों की तुलना में क्रमशः 23.8% और 28.4% अधिक है। पिछले एक वर्ष में सरकार की विदेश नीति हमारे अपने राजनीतिक एवं सुरक्षा हितों के संवर्धन को जारी रखते हुए विदेशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों में हमारे आर्थिक हितों की रक्षा पर केंद्रित रही। हमारे आर्थिक सुधारों की सार्थकता से विदेशों को प्रभावपूर्ण ढंग से अवगत करा दिया गया है। पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। इस वर्ष बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे पारस्परिक कार्यकलापों में भी काफ़ी प्रगति हुई है। केवल पाकिस्तान के मामले में उसके द्वारा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और विद्रोह का समर्थन किए जाने तथा विश्व भर में भारत विरोधी कार्य किए जाने के कारण संबंधों को सामान्य बनाने के हमारे प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के समक्ष शिमला समझौते के अनुरूप एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में द्विपक्षीय वार्ता की गई है, किंतु पाकिस्तान ने भारत विरोधी बयानों की भरमार से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे और पाकिस्तान की जनता के बीच कोई झगड़ा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर शिमला समझौते के अनुरूप भारत पाकिस्तान संबंधों को सामान्य बनाने की हमारी कामना में बराबर सहयोग दे। चीन के साथ हमारे संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सितंबर 93 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बनाए रखने के करार पर हस्ताक्षर करने से इन संबंधों में नए आयाम विकसित हुए हैं। इस करार के अधीन गठित विशेषज्ञ दल ने हाल ही में अपनी पहली बैठक की और उसमें इस पेचीदा मुद्दे पर परस्पर संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने की दोनों पक्षों की इच्छा को अभिव्यक्त किया। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को इसके चार्टर के उद्देश्यों के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग का माध्यम मानता है। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष ढाका में हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ने आम हित के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे गरीबी, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, महिलाओं, बालकों और युवाओं की स्थिति तथा मादक पदार्थों से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क चार्टर के अनुरूप उसके सामाजिक, आर्थिक और अन्य उद्देश्यों का संबोधन करने के लिए सार्क संगठन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से लेकर संस्कृति और खेलकूद के अनेक क्षेत्रों में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपस में पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपसी समझबूझ की दिशा में और ऐसे मुद्दों पर जिनके संबंध में समझबूझ बढ़ाने की आवश्यकता है मिलकर काम करना चाहते हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ व्यापक परीक्षण रोक संधि जैसे निरस्त्रीकरण से संबंधित मसलों पर भी सहयोग किया है। हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के प्रति संयुक्त राज्य ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और पिछले 2 वर्षों में संयुक्त राज्य ने भारत में काफ़ी निवेश किया। इससे हमारे दोनों देशों के बीच जीवंत लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आदर्श परिलक्षित होते हैं। विगत दिनों में हमारी मैत्री की समृद्ध परंपरा के आधार पर रूसी संघ के साथ हमारे संबंधों में आपसी समझबूझ और सहयोग बना रहा। दोनों देशों के समक्ष आई कुछ कठिनाइयों के बावजूद
राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग का दोनों पक्षों द्वारा समर्थन करने का प्रयास किया गया। हमारे संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाली हमारी सद्भावना और समझबूझ से आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों के आगे सहयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने में हमारे प्रयासों को बढ़ावा दिया गया। मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 1993 में प्रधानमंत्री की उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की यात्राएं बहुत सफल रहीं। पिछले वर्ष उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा की। भारत और इन दोनों देशों के बीच राजनीति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग तथा व्यापार, नागरिक विमानन और संस्कृति क्षेत्रों में भी सहयोग के कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ और पूर्व एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ सहयोग के एक नए युग के सूत्रपात के लिए संगठित रूप से प्रयास किए गए, नए आर्थिक संबंध स्थापित किए गए और व्यापार बढ़ाया गया। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के देशों के बीच क्षेत्रीय बातचीत का शुरू होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। अप्रैल 93 में प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा से भारत थाई संबंधों को नया बल मिला। भारत सिंगापुर संबंधों में गुणात्मक सुधार हुआ है और सिंगापुर के प्रधानमंत्री गो चॉक टोंग ने इस वर्ष जनवरी में हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहतर मोहम्मद और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने भी दिसंबर 93 में भारत की यात्रा की। सितंबर 93 में उपराष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा से वियतनाम के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हुए। सरकार जापान के साथ आर्थिक तथा अन्य संबंधों को अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयास करती रही। कोरिया गणराज्य के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने 93 में कोरिया गणराज्य की यात्रा की, जिसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे और अब आर्थिक संबंधों में भी सहयोग बढ़ रहा है। सितंबर 93 में प्रधानमंत्री की ओमान और ईरान की यात्राओं ने पारस्परिक आर्थिक लाभ के बढ़ते हुए संबंधों की नींव डाली। हम पश्चिमी एशिया में शांति स्थिरता स्थापित करने तथा फिलिस्तीनी लोगों के जायज़ अधिकारों को वापस दिलाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्त संगठन के बीच सितंबर 1993 में संपन्न अंतरिम स्वशासी व्यवस्थाओं के सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत करते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने विविध क्षेत्रों में आपसी लाभदायक संबंधों को और अधिक विकसित करने को जो महत्व दिया है, उसका परिचय 20 दिसंबर 1993 को संपन्न साझेदारी और विकास पर सहयोग समझौते तथा राजनैतिक बातचीत पर भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त वक्तव्य से मिलता है। पिछले वर्ष यूरोप से जिन उच्चतरीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की, उनमें आयरलैंड की राष्ट्रपति, स्वीडन के नरेश और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्विट्जरलैंड में डावोस और जर्मनी की सफल यात्राएं की। डावोस में प्रधानमंत्री ने विश्व भर से आए उद्योगपतियों, राजनीतिक नेताओं और प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत की नीतियों और क्षमताओं के प्रति समझबूझ बढ़ी है। जर्मनी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और बल मिला है तथा आर्थिक सहयोग और मजबूत हुआ है। जुलाई 93 में मैंने यूक्रेन, तुर्की और हंगरी की राजकीय यात्राएं की, जो इन देशों के साथ हमारे सहयोग पूर्ण संबंधों और सुदृढ़ बनाने की हमारी इच्छा का परिचायक है। ये पहली किसी भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा थी इन देशों की। इस वर्ष के दौरान हमने उप सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक पारस्परिक बातचीत की, जिसमें बुर्किना फासो, मॉरिशस, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएं शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो रही विकास की सकारात्मक गतिविधियों हमारे ध्यान में हैं और वहाँ पर बहुमत वाली सरकार शीघ्र स्थापित हो, इसकी हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों,
आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण और जनसंख्या से संबंधित विषयों पर विश्व कार्य सूची को एक स्वरूप प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अथवा इन विषयों से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विभिन्न बैठकों में विश्व सहमति को बढ़ावा देने के लिए हमने विकासशील देशों की विशेष चिंताओं को उजागर करने में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वर्ष 93 के आर्थिक सुधारों के लाभों और सरकार द्वारा की गई राजनीतिक पहल को सुदृढ़ करने का वर्ष रहा है। हमने 94 में इस आशा के साथ प्रवेश किया है कि हम अपने आर्थिक विकास की गति को और अधिक बढ़ाएंगे। लोगों ने सुधारों के पक्ष में और सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो समर्थन दिया है, उससे हमारी आशा सुदृढ़ हुई है। मुझे विश्वास है कि सत्र के दौरान तथा इसके आगे भी आपकी बहस तथा विचार विमर्श लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में राष्ट्र को और आगे ले जाएगी। मैं आपको आह्वान करता हूं, आप अपने कार्य में जुट जाएं। मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद। Honorable members, I welcome you to this session of Parliament. As I address you in the new year, I sense that the country is today in a frame of mind different from the one it was this time last year. We faced many difficulties at the beginning of the year 1993, but our people displayed tremendous resilience as the year progressed, and 1993 ended certainly on a note of optimism. There was steady progress on all fronts, as evidenced from the improved law and order situation, a record food grains production, unprecedented levels of procurement, very high levels of food grain stocks, containment of the rate of inflation at a single-digit level, comfortable foreign exchange reserves, considerable reduction in trade gap, buoyancy in exports, improved performance in certain essential areas of the infrastructure sector, and increased inflow of foreign investment, both direct and portfolio. All these have symbolized and justified this emerging optimism. Clearly, we have regained our elan internally and our confidence globally. We have reason and justification to feel encouraged at the all-round performance, but we still have a long way to go before we achieve the objectives we have set for ourselves in social and economic development. It is on this note of cautious optimism that government approaches its task in 1994. There has been overall improvement in the law and order situation. The situation in regard to insurgency in the northeast has shown improvement. The gains of last year in Punjab were consolidated. The elections to the assemblies in the 5 states and the National Capital Territory of Delhi were peaceful. Government is determined to consolidate the gains of this improvement and address the areas of concern that still remain. Around this time last year, the Ayodhya issue had cast its long shadow on the national scene. There was a great deal of concern over the possible fallout of the demolition and the riots that followed. Thanks to the inherent wisdom and sagacity of the Indian people, the grim predictions that were being made have been proved wrong. The atmosphere has improved considerably, and we can hope for a lasting solution to the dispute. Proceedings are continuing in the Supreme Court on the reference made to it under the Constitution. Government will take appropriate measures in the light of the opinion of the Supreme Court. The Ayodhya issue is the most convincing demonstration in recent times of the danger inherent in mixing communalism and politics. It is of utmost importance to correct this aberration and keep both religion and politics in their legitimate domains. Our secular state demands nothing less. The issue needs to be debated fully and effective measures evolved. The government will welcome suggestions in this regard.
In Jammu and Kashmir, we pursue our policy of firm action against terrorism. The police and the security forces have gained considerable success during the year in their counter-terrorist operations. Steps have been taken to further improve their operational efficiency. Every effort is made to see that the maximum restraint is exercised in the use of force. The grave crisis that arose in Hazrat Bal Shrine was handled by the administration and the security forces in a commendable manner with the cooperation of the people. The resolution of this crisis demonstrated the efficacy of government's approach of restraint. Whenever there has been any incident suggesting excessive use of force, an inquiry has been promptly instituted and action taken. Action against the terrorists is continuing in order to restore law and order. At the same time, appropriate measures are being taken to tone up the administration. Development and economic activity have been intensified to generate employment opportunities. We are deeply concerned about the difficulties of the common people, and the grievance redressal mechanism has been strengthened. We are also pursuing steps to bring about effective involvement of the people in dealing with matters which concern them. Jammu and Kashmir is an inalienable part of India, and we shall foil any attempt to destabilize it, either from across the border or from any other quarter. In the northeast, the setting of the interim Bodoland Autonomous Council in pursuance of the Bodo Accord marks a positive step forward towards meeting the aspirations of the tribal population. Prompt action was taken by the government of Assam in the district of Kokrajhar and Bongaigaon when there was an outbreak of violence against the non-tribals. In Manipur, government took action under Article 356 of the Constitution following violence between Nagas and Kukis and general disruption of law and order. This demonstrated the government's will to curb disruptive elements effectively. The National Commission on Human Rights has been set up with a former Chief Justice of India as its chairman. Members of the Commission include a former Judge of the Supreme Court and one former Chief Justice of a High Court. The setting up of the Commission is indicative of our continuing determination to deal with questions of human rights with promptitude and transparency. The Commission has started its work in right earnest. Chief Justice of India as its chairman. Members of the Commission include a former Judge of the Supreme Court and one former Chief Justice of a High Court. The setting up of the Commission is indicative of our continuing determination to deal with questions of human rights with promptitude and transparency. The Commission has started its work in right earnest. In order to strengthen the accountability of the Executive to Parliament, 17 department-related standing committees of Parliament were constituted in April 1993 to make detailed examination of bills, demands for grants, annual reports of the ministries, and national basic long-term policy documents presented to the House. This will greatly facilitate the working of Parliament. The country had its share of natural calamities. However, the unprecedented scale of damage in the Maharashtra earthquake stands out among these. In all these instances, government responded with commendable alertness and provided prompt relief. Governments of several other countries, the World Bank and other institutions promptly offered assistance, and we are grateful to all of them. A massive reconstruction program in the earthquake-affected areas of Maharashtra is being taken up at an outlay of rupees 1,000 crores. Non-governmental organizations are being appropriately associated with the reconstruction program. The economic reforms introduced in 1991 gained momentum last year and have been pursued consistently. Still, much more needs to be done. Government is aware that the reform is an irreversible and continuous process and needs to be implemented with determination and foresight, keeping the responses
and circumstances in the country constantly in view. As a result of this approach, the progress of implementation has been steady and firm and based on a general consensus. We shall hasten with care. Based on the performance and prospects of the public and private sectors, the area of reservation of the public sector has been trimmed and some more industries have been delicensed. The new Exim policy announced on the 31st of March 1993 attempted the streamlining of procedures and the liberalization of exports in agriculture and services where the country has a comparative advantage. The budget for 1993-94 provided fiscal incentives for investments in thrust areas. In drawing up the reform package, stress has been laid by the government on reforms in the financial sector. The financial institutions have necessarily to be restructured and strengthened to enable them to take on the new responsibility imposed by the expanded activity in the private sector. An important policy change was the unification of the exchange rate and the floating of the rupee in March 1993. The fact that the rupee has remained steady since it was floated is testimony to the good judgment of the government in the matter. The basic economic indicators show that although the year started in a different environment, the performance of the economy during 1993-94 has been satisfactory. In 1992-93, the gross domestic product is estimated to have grown by 4%. In 1993-94, the government expects the rate of growth to be maintained at about the same level. The inflation rate touched a low of below 6% for a short period during this year, the highest level being 8.4%. Global investors have shown growing confidence in the Indian market. Direct foreign exchange investment approved since the inception of the new industrial policy till the end of 1993 is now approximately rupees 13,000 crores in terms of equity. The total investment in these projects is estimated to be of the order of rupees 65,000 crores. The significant point of this investment is that the bulk of this is proposed in sectors like power, oil refining, food processing, metallurgical industry, electrical equipment, chemicals, electronics, and other priority areas. Only 7% of the proposed investment will be for products which could be categorized as consumer goods. The investment inflow will be spread over a period of 3-4 years, which is the gestation period of the mega projects. Government continues to lay a great deal of emphasis on export promotion. The results of changes in the trade policy, coupled with the floating of the exchange rate and the general liberalization of the economy, have yielded results, and exports have shown good growth, recording an increase of around 20% in dollar terms during the April-December 1993 compared to a little over 3% in the corresponding period in 1992. Government attaches the highest priority to development of agriculture. The timely provision of adequate and reasonably priced inputs and the creation of a structure that provides for the timely announcement of prices, which in turn promotes higher production so as to meet fully the domestic needs of the country as well as exports, are the major objectives of the government. In keeping with the overall strategy, the plan outlay for the Department of Agriculture and Cooperation has been raised by 26.6% from rupees 1,050 crores in 1992-93 to rupees 1,330 crores in 1993-94. The production of food grains during the 1992-93 period was 180 million tons, which was more than the production in 1991-92 by 7.1%. The Kharif food grains production in 1993-94 is expected to be 99 million tons. The prospects for Rabi are excellent. Government is encouraging diversification of the agriculture sector through emphasis on horticulture, aquaculture, oilseeds, pulses, and other commodities which have an export potential. This would be done without detriment to the interests of our own consumers.
Steps are being taken to revitalize the rural cooperative credit system as also marketing, processing and other services essential to the farmers, particularly in the far-flung areas. Extension services would be broad-based, keeping in view the new priorities in agriculture, including through greater involvement of the voluntary organizations. As a measure of reducing poverty levels, our agricultural strategy would aim at increasing agricultural production in the rain-fed areas through an integrated strategy of soil and water conservation and increased use of agricultural inputs such as organics and biofertilizers and improved technology. During the 8th plan period, 8th plan rupees 1100 crores have been allotted for the restructured National Watershed Development Project for rain-fed areas. About 30 lakh hectares of land would be treated for sustainable production of food, fodder, fuel and fiber through dryland farming technology. Household production systems would diversify as a consequence, and ultimately the income levels and employment opportunities for the watershed community would improve. The project would also enhance availability of groundwater, resulting in drought proofing of the project areas. 250 micro watersheds have been identified in rain-fed areas for development, and work on these has started. The manufacturing capacity of nitrogenous fertilizers has been increased and more is being planned. The availability of raw materials required for further production within the country being limited, efforts are being made to set up joint ventures abroad, particularly in the Gulf and West Asia. Government will continue to take all measures required to bring about a balanced application of soil nutrients so that production levels are sustained. As part of the agricultural policy, states have been advised to remove all intra and interstate restrictions on the movement of food grains. Government's commitment to safeguard the interest of the consumer remains as strong as ever. The central issue price for the revamped public distribution system areas continues to be kept at a price lower than rupees 500 per metric ton compared to the prices in the general public distribution system to enhance affordability by the poor. At the inception of the scheme in 1992, 10,580 new fair price shops were estimated as required to be opened in the revamped public distribution system areas to strengthen the delivery system. Against this, 11,681 new fair price shops have been opened in these areas, going beyond the target. New storage space of 1,81,296 tons has been also created on hired since the inception of the scheme. A midterm review of the revamped public distribution system has revealed that nearly 1.5 million tons more of food grains went to the rural areas before the inception of the scheme, thus adding a new rural dimension to the public distribution system. With a record food stock holding of 22 million tons in the central pool reached on 1st January 1994, resulting from stepped-up procurement efforts, government is comfortably placed to augment the coverage further in these areas should it become necessary. It is government's determination that no vulnerable section of the population, be it women, children, minorities, scheduled castes, scheduled tribes, or backward classes, should remain outside the mainstream of development. In all areas of development of the poor, resource allocations were enhanced during 1993-94 compared to the previous year. The revised outlay for the Ministry of Rural Development went up by 56%, while the plan outlay of the Welfare Ministry was raised from rupees 820 crores to rupees 980 crores. The Jawahar Rozgar Yojana has been strengthened in 120 most backward districts. The subsidies under the Integrated Rural Development Program were
enhanced by rupees 1,000 per household. The improved toolkits to rural artisans program started in 1992-93 was extended in 1993-94 to 100 more districts, thus covering in all 162 districts in the country, benefiting 230,000 rural artisans. Comprehensive programs for the welfare and development of the weavers were evolved. They include housing, workshops, handloom development centers, quality dyeing units, training in improved practices and provision of working capital. These programs, with a total outlay of rupees 1,372 crores, were started during the year. The scheme for handloom development centers and quality dyeing units, launched towards the end of 1993, seeks to merge and expand existing units and establish new ones. Against the 1993 target of 120 centers and 20 units, 213 centers and 94 units have been approved. 25 centers and 25 units have already started operating. Government has formulated 3 new and innovative schemes to benefit the poor, particularly rural women and urban youth. The Employment Assurance Scheme introduced in 1,752 of the most backward and remote blocks of the country, where 17 crores of India's poor people live, will provide assured wage employment for 100 days during the lean agricultural season to the rural labor. This scheme thus expands rural employment to fuller levels. The Mahila Samriddhi Yojana will empower rural women by enabling them to gain and exercise control over their earnings and household resources. Already more than 4 lakh women have opened accounts under this scheme in rural post offices. This scheme, along with the Rashtriya Mahila Kosh, would greatly enhance opportunities for employment among rural women. To provide sustained employment to the educated urban youth in micro enterprises, a Rozgar Yojana has been launched. About 1,95,000 applications have been received so far from youth in different states. So far, 41,275 applications have been processed and recommended to banks, and about 2,000 of them have been sanctioned. During this current year, the scheme will cover 40,000 beneficiaries, and from 1994-95 onwards, it is intended to cover 2.20 lakh beneficiaries every year, thus covering in all 7 lakh beneficiaries during the rest of the 8th plan period. The Reserve Bank of India has been instructed to support the program fully. The scheme provides for 22.5% reservation for the scheduled castes and scheduled tribes and 27% for the other backward classes, with preference for women. A significant role has been envisaged for non-government organizations in all these programs to generate awareness and for their effective implementation. To monitor the progress of implementation of the programs of the weaker sections and to provide the direction and thrust required, the Prime Minister has set up a special cell in the Prime Minister's office. This special cell will receive feedback from the implementing departments and also information based on field visits and independent evaluations, so as to remove all possible bottlenecks in the programs. A special committee of secretaries responsible for the implementation of these 3 programs has also been set up to supervise the coordinated implementation of these programs in the field. Communication facilities will be further extended in rural areas. In 1993-94, 46,800 panchayats will be connected by telephone. It is proposed to provide public telephone to 72,000 villages during 1994-95. In the schemes for the welfare of scheduled castes, the allocation under special central assistance for the special component plan was augmented in 1993 and its scope expanded to include schemes for infrastructure development in areas with 50% or more scheduled caste population.
An important landmark of the year was the passing of the National Commission for Safai Karamcharis Act, which would help the rapid implementation of the liberation and rehabilitation of the Safai Karamcharis. The National Commission is being constituted. Government is fully alive to the situation arising from the atrocities against the scheduled castes in certain parts of the country. Protection to the scheduled castes under the law, as well as the effective implementation of programs of socio-economic development meant for them, would be ensured. During 1992-93, nearly 21 lakh scheduled caste families and 8 lakh scheduled tribe families were assisted to cross the poverty line under the 20-point program. During the 1993-94, the number of assisted families is likely to reach 27 lakh scheduled caste families and 9 lakh scheduled tribe families. A scheme of educational complexes in areas where tribal female literacy is very low was initiated during the year. 13 such complexes have so far been sanctioned. The turnover of the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India rose from rupees 22 crores in 1991 to rupees 86 crores in 1992-93. This is expected to be much higher in the current year. The National Backward Classes Finance and Development Corporation made significant advances during the current year. During 1993, it sanctioned rupees 80 crores as loans. In the coming year, it proposes to double its operations. The long-awaited reservation of vacancies for other backward classes in the services under the Government of India became a reality on 8 September 1993 when the present government issued orders for 27% reservation for the backward classes. With this, one of the most important aspirations of the other backward classes of the country has been met. The work relating to the publication of the works of Baba Sahib Ambedkar in regional languages was taken forward, and 2 volumes each were brought out in Hindi, Tamil and Gujarati, with the work in other languages proceeding well. 8 chairs have been sanctioned in different universities for undertaking research in the philosophy of Baba Sahib. A new Waqf Bill 1993 has been introduced in Parliament in August 1993, replacing the existing Waqf Act 1954 and the Waqf Amendment Act 1984. This bill inter alia provides for a more democratic composition of the Waqf Board with provision of Waqf tribunals to decide issues relating to Waqf matters and for better protection and management of Waqf properties. A National Minorities Finance and Development Corporation will become operational this year with an authorized share capital of rupees 500 crores for promoting the economic development of the minorities. The modalities are being worked out. In my last address to you, I had referred to the review of the 1986 National Policy on Education undertaken in 1992 and the modifications effected. Government continues to give very high priority to literacy and primary education based on the innovative strategies of total literacy campaigns backed by post-literacy campaigns and a new district-specific and community-oriented approach to primary education. All the 18 districts of Kerala and Pondicherry have achieved total literacy. In the 32 districts which have already successfully concluded the total literacy campaigns, post-literacy campaigns have been launched to ensure that the neo-illiterates do not lapse into illiteracy. At present, 238 total literacy campaigns are going on in 258 districts. The new district primary education program lays emphasis on the participatory planning and management and focuses on the education of girls. It seeks to enhance school effectiveness through inputs in teachers' training and decentralized management. India played host to the Education for All Summit or the 9 high population countries of the world when our commitment as well as that of the international community to achieving education for all by the turn of the century was reaffirmed. On this occasion, the Prime Minister announced government's decision to raise the outlay on education 6
to 6% of the GDP by the turn of the century. This will be kept in view while formulating the 9th five-year plan. Further, through disaggregated target setting and decentralized government aims to achieve its objects of education for all. On account of sustained efforts of the Government of India and the state governments in the implementation of the National Family Planning Program, the annual rate of growth of population is showing a declining trend. The annual average exponential rate of growth in 1981-91 was 2.14. The annual rate of increase has come down to 1.9% in 1992. The crude birth rate, which was 41.7 per thousand in 1951-61, has come down to 29 per thousand in 1992. The crude death rate, which was 22.8 in 1951-61, has come down to 10 in 1992. The total fertility rate, which was 5.97 in 1951-61, has come down to 3.6 in 1991. The infant mortality rate for the country as a whole has come down from 146 per thousand live births in 1961 to 71 in 1992. While these are significant achievements, yet the increase in numbers is staggering. Government attaches the highest importance to the reduction in the rate of growth of population. There is a national consensus to promote family welfare. Multi-dimensional and multi-sectoral efforts involving state governments, opinion leaders, non-governmental organizations, and all sections of the society are essential. All political parties must unanimously exhort the people to adopt the small family norm and transform the family planning program into a mass movement. The National Development Council has endorsed the recommendations of the Committee on Population set up by it earlier. The NDC also decided that wider consultation should take place on the future course of action needed for the implementation of the recommendations of NDC Committee with Chief Ministers and opinion makers. This will be done shortly. We are aware of the linkages between the development process and the protection of environment. The need for the conservation and wise use of natural resources is reflected in our major river cleaning and pollution abatement programs, as in our forest and wildlife policies. While participating in the continuing international debate on biodiversity, climate change, and desertification, we have kept in focus the basic issue raised in the Rio Summit of 1992 of access to resources and technology. Within the government, our development efforts will take full note of all our environmental concerns. The space programs have made steady progress. We had a failure in the flight of the Polar satellite launch vehicle, but this has been put to good use. The data collected has been analyzed, and it has proven the effectiveness of complex systems involved. The next flight of the Polar satellite launch vehicle is planned for August-September 1994. There has also been progress in the development of the Indian geosynchronous satellite launch vehicle, which would enable launch of INSAT-class satellites some years hence. The successful launch and commissioning of INSAT-2B last year, within a year of commissioning INSAT-2A, is a demonstration of our capabilities. INSAT-2B has enabled Doordarshan to augment its services with 5 satellite channels. This has strengthened the programs telecast by Doordarshan in regional languages. India has a strong and large scientific and industrial infrastructure. It has demonstrated it also has demonstrated capability in several high technology fields. In this context, I am sure honorable members will join me in applauding the successful demonstration of high technology in the launch of Agni last Saturday. The pace of technological changes and the need to shift to technologies which are environment compatible impose upon us various demands. Restrictions being placed on transfer of technology require us to rely more on our own talents. Government is determined to give every encouragement for this to happen by tapping the great potential
that the country possesses. In the context of the emerging economic scenario, the benefits of research will be harnessed for use by industry. A fillip will be given to exports of high technology products. The thrust will be on information technologies and genetic engineering and biotechnology. Advanced materials and devices for use of solar and other non-conventional energy sources will also be priority areas. Our armed forces maintain their constant vigil on our borders to safeguard the territorial integrity of our country. The nation is proud of them and of the defense scientists and engineers who have contributed commendably to our defense preparedness. Progress in the indigenous development of arms and ammunition and the diversification of the defense production units is proceeding apace. In addition to their normal duties, the armed forces have been assisting the civil authorities in maintaining law and order whenever required and in counter-insurgency operations. They have also been helping in rescue and relief operations in times of natural disasters. Their performance in these areas has been exemplary. Government remains committed to providing better facilities and conditions to serving and retired armed forces personnel. Those posted in field areas have recently been granted higher allowances. It has been decided to extend the benefit of the one-time increase scheme in pensions to an additional 2 lakh pensioners. As a result of sustained international marketing, government has succeeded in instilling confidence in the international community that India is among the safest tourism destinations of the world. This has resulted in an all-time record of arrival of tourists in the months of December 1993 and January 1994, registering an increase of 23.8% and 28.4% respectively over the corresponding months in 1992-93. The foreign policy of the government focused during the last 1 year on securing our economic interests in our relations with countries abroad while continuing to promote our political and security interests. The significance of our economic reforms was effectively conveyed abroad. Our relations with our neighbors continue to be cordial, and our interaction in various fields with Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka recorded good progress during the year. In the case of Pakistan, however, its continuing support for terrorism and subversion in J&K and anti-Indian activities worldwide seriously hampered our efforts at normalizing relations. The Prime Minister offered Pakistan a dialogue aimed at establishing good neighborly relations as enshrined in the Shimla Agreement. Bilateral talks have since taken place, but the stridency of Pakistan's anti-Indian statements has grown, adversely affecting efforts at improving bilateral ties. There are no quarrels between us and the people of Pakistan. We feel that for good relations between our countries, the government of Pakistan should give up its negative approach and reciprocate our desire to normalize India-Pakistan relations in accordance with the Shimla Agreement. Our relations with China have improved markedly. The Prime Minister's visit to China in September 1993 and the signing of the agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of actual control have brought them to a new stage of development. The expert group set up under this agreement held its first meeting recently, reflecting the desire of both sides to maintain and continue the interaction on this complex issue. India values SAARC as an instrument of regional cooperation consistent with the objectives of its charter. The Prime Minister attended the SAARC summit in Dhaka last year. SAARC has recorded progress in dealing with certain important issues of common interest such as poverty, terrorism, population growth, problems relating to the status of women, children, youth, and drugs and psychotropic substances. We continue to play an active role in SAARC with a view to promoting its socio-economic and other objectives in accordance with the SAARC Charter. Our interaction with the United States has traditionally ranged over a number of areas, from education and science
and technology to culture and sports. We have also cooperated in the UN on issues relating to disarmament, such as the Comprehensive Test Ban Treaty. The response from the United States to our economic liberalization policies has been very positive, and the US investments in India in the last 2 years were very substantial. We look forward to working with the United States towards mutual understanding, including on those issues on which such understanding needs enhancement. These will reflect the vibrant, democratic and secular ideals of our two countries. Relations with the Russian Federation, drawing upon the rich traditions of our friendship of the past, continued with mutual understanding and cooperation. Despite certain difficulties, and the two countries face cooperation in the political, economic, commercial and other areas was sought to be promoted by both sides. The goodwill and understanding that underpins our relations reinforce our joint efforts at identifying possibilities of further cooperation in various areas in today's changed context. Special attention was given to strengthening relations with the Central Asian region. The Prime Minister paid very successful visits to Uzbekistan and Kazakhstan in 1993. The Uzbek and Kazakh presidents also visited India during the past year. A number of accords have been signed between India and these two countries in fields ranging from political cooperation and cooperation in science and technology to trade, civil aviation and culture. A concerted effort was made to forge a new era of closer cooperation with ASEAN and East Asian countries. New economic linkages were established and trade increased. The commencement of a sectoral dialogue between India and ASEAN was a notable development. The Prime Minister's visit to Thailand in April 1993 gave a new impetus to Indo-Thai relations. India-Singapore relations were qualitatively upgraded, and Prime Minister Goh Chok Tong of Singapore visited India as chief guest at our Republic Day celebrations in January this year. Prime Minister Mahathir Mohamad of Malaysia and President Suharto of Indonesia also visited India in December 1993. Our ties with Vietnam were reinforced with the visit of the Vice President of Vietnam in September 1993. The government continued to make sustained efforts to further enhance economic and other linkages with Japan. The Prime Minister's visit to the Republic of Korea in September 1993 with a view to lending further momentum to bilateral economic ties with that country received a positive response. Our relations with the Gulf countries, traditionally cordial, are now marked by increasing economic interaction. The Prime Minister's visits to Oman and Iran in September 1993 laid the foundation of an expanding relationship for mutual economic benefit. We welcome the signing of the Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements between Israel and PLO in September 1993 as a notable step towards peace and stability in West Asia and the restoration of the legitimate rights of the Palestinian people. The importance attached by India and the European Union to further developing mutually beneficial relations in diverse fields was symbolized by a cooperation agreement on partnership and development concluded on December 20, 1993 and the Indo-EU joint statement of political dialogue. High-level dignitaries who visited India from Europe during the past year included the President of Ireland, the King of Sweden and the Prime Minister of the Netherlands. The Prime Minister recently paid a very successful visit to Davos in Switzerland and to Germany. At Davos, the Prime Minister addressed a worldwide audience of industrialists, political leaders and academicians. As a result, the appreciation of India's policies and potential has grown. The visit to Germany has been a further impetus to bilateral ties and a strengthened economic cooperation. The state visits which I undertook to Ukraine, Turkey and Hungary in July 1993 were a manifestation of our desire to consolidate our cooperative ties with these countries. During the year, we had made interaction with countries in the sub-Sahara region, including visits
at the level of the President and Prime Minister from Burkina Faso, Mauritius, Tanzania, Zambia and Zimbabwe. We have noted the positive developments in South Africa and look forward to the early establishment of majority rule there. India continues to play an active role in shaping the global agenda on issues pertaining to political and security matters, economic and social development, human rights, environment and population. In the various meetings of the United Nations, the non-aligned movement or other international bodies on these issues, we have taken a lead in articulating the specific concerns of the developing countries with a view to promoting a global consensus. In 1993 was a year of consolidating the gains of the economic reforms and the political initiatives of the government. We entered 1994 with the optimism of accelerating our pace of economic growth, strengthened by a reassuring verdict of the people in favor of reforms and against the forces of communalism. I am confident your debates and deliberations in the course of this session and beyond will take the nation forward in fulfilling the aspirations of the people. I commend you to your task and wish you all success. Jai Hind. The conclusion of the President's address also marks the end of the joint session. The two houses will meet separately in a short while from now, when the authenticated copies of the President's address will be placed before each house for discussion. The highlight of this session is, of course, the budget presentation, which we will bring you live at 5 p.m. next Monday. But before that will be the railway budget on Thursday at 12 noon, which will also be brought to you live by Doordarshan. जैसा चंद्रा ने बताया, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी महीने की 28 तारीख को आम बजट पेश करेंगे। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 24 तारीख को रेल मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ रेल बजट पेश करेंगे। इन दोनों कार्यवाहियों का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण होगा। रेल बजट का 24 तारीख को 12 बजे से और आम बजट का 28 तारीख को 5 बजे शाम से। सीधे प्रसारण का समय एक बार फिर नोट कर लें। रेल बजट 24 तारीख को 12 बजे से और आम बजट 28 तारीख को 5 बजे शाम से। इस जानकारी के साथ ही मैं प्रभात डबराल अपनी सहयोगी चंद्रलेखा के साथ आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूं।